welcome to this session. First of all, I want to congratulate five of you, and the reason is that because you are the chosen one, it means you got something initially. हमें बस उसको पॉलिश करने की, उस स्पार्क को इग्नाइट करने की ज़रूरत है. आई बिलीव कि हमें ये स्पिरिट सिर्फ इस प्रोग्राम के एंड तक नहीं रखनी चाहिए. मतलब हमारी जो भी लर्निंग, जो भी चीज़ें होंगी, उससे आगे कंटिन्यू रखेंगे और इंशाल्लाह अपने ऑन पे फर्दर एफर्ट करते रहेंगे. अपने लिंक्डइन प्रोफाइल्स एस्टेब्लिश करें, नेटवर्किंग करें, लोगों के साथ मिले जुलें और इसी तरह से ये जो कनेक्शंस होते हैं ना, बिलीव में ये अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर ब्लूम करते हैं. ओके, सो ईसा, प्लीज़ टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड योर जर्नी एंड शेयर इट विद योर फेलोज. Assalamu alaikum. So I am Muhammad Ali Isa, as you already know, and my mentor name is Kenmar. So it's a lot of time that we have been taking sessions, and I have learned a lot from it. My mentor skills are basically infrastructure of AI and the deep in machine learning side. So the one thing I would like to say that when I started this journey, I had a fear of how to speak with international people and how to speak with those who are out of your religions. So this was a very fear of mine, and I do accepted that on the first day I was shaking in fear. I could not talk and mumble or humming and things That's like that. And then from the start and then the second or third session, I feel comfortable, and now I think I am on a step that I can talk with anyone freely. Let's say if your mentor gives you a chance to visit Japan, right? So what's the first place you would like to visit? Well, the first place I would like to visit is Tokyo, and then I would like to visit Shibuya. Nice. The second one is, if this program had, let's say, a movie title based on your life, what it would be called? I would like to say Two People in Deep Love. Assalamu alaikum everyone. Myself is Zoyaman, and I'm recently pursuing my bachelor's degree from University of Rawalpindi. जो मेरा फर्स्ट सेशन था, as I mentioned, my mentor was Brian. He was really a nice person, so kind. So literally हमारा first session था. He gave me a comfort zone. We are friends. You can share everything with me, every detail up. What's the small win that you are proud of that nobody really knows about? Global Horizons was actually a big win for me. I was selected from अपने students में से select होना, interviews pass करना और फिर connect होना और फिर sessions. These everything was also a win to me. So, what's the skill you have been wanting to learn that you hope this mentorship sparks? एक ऐसा skill, एक ऐसी चीज that you were trying to polish or you were trying to get, और आपको realize हुआ कि this is the skill that this mentorship can provide me. What's that? As you know, I'm pursuing Bachelor's of Computer Science, and my domain from Global Horizons program is climate change and sustainability. So I want to connect both of these. कि मैं टेक्नोलॉजी को कैसे इस चीज में लेके आ सकती हूँ, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी के लिए मैं टेक्नोलॉजीज और ये साइंसेस की फील्ड्स को यूज करके उसको एनहांस कर सकती हूँ, उसको बेस्ट कर सकती हूँ. सो आई वांट कि ब्रायन से मैं इस तरह के डिस्कशंस करूँ, इस तरह के टॉपिक्स पे हमारी बात हो और हम इस चीज को एनहांस कर सकें. And the one thing I want to improve, and I know कि improve हो भी रही है, communication skills, leadership skills. तो ब्रायन से मैंने सीखा बहुत कुछ और इंशाल्लाह next onwards भी सीखते रहूँगी. I'm Alam Jabbar, a student of University of Rawalpindi studying Bachelor's in Computer Science. और मेरे मेंटर ग्रेस है, और ग्रेस एक गुड एंटरप्रेन्योर होने के साथ एक स्मॉल बिजनेस ओनर भी है. She runs food business. तो वो मेरे लिए एक बहुत था कि वो एक गुजरी है. मेरा जो कि प्रोजेक्ट था, जो कि फील्ड थी, वो थी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप. के लिए ये बताना बहुत इजी था. वो जो फेस कर रही हैं कि उन्हें जो थ्रू आउट चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था. और साथ में हमें डिफरेंट केस स्टडीज भी की, फिर जो चीजें उन्हें लगता था कि जरूरी है कि एक बिगिनर को जानने के लिए, तो उन्होंने बहुत अच्छा कवर किया. एक केस स्टडी भी की, कुछ बिजनेस स्टार्टअप्स फाउंडर्स के साथ बात की. सो इट इज गोइंग ग्रेट एंड आई होप नेक्स्ट विल गो ग्रेट. What's the book, movie, or a podcast that you would recommend to your mentor to understand you better? Introvert in network. What's that? I was trying to make network. I'm trying to connect with people. Right. That will describe me the best. If you could trade places with your mentor, if you can be Grace for one day and Grace can be Anam for one day, okay, you swap up places, what would you do?
she do a lot of collaboration Uh-huh. and she has a lot of experience. So I would like to learn about that. And if I have a chance to learn about the experience and the business startup in the real with the it will be really good for me. सो ऐसी क्या एडवाइस है जो आप सोचती हैं कि ये एक एडवाइस है जो मैं मेंटरशिप के जर्नी के बाद बता सकूं उन्हें? वो मुझे बता रही थी कि उन्हें नए इन्वेस्टर्स ढूंढने में काफी जो है वो मुश्किल आ रही थी, रीचिंग आउट फर्स्ट होने में। तो मैं कहूँगी कि चैलेंजेस को फेस करना तो सबको करना है, लेकिन अगर रिजेक्शंस होती हैं तो उससे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर एक दफा आपने नो किया तो नहीं आंसर हुआ, बुरा तो लगता है ऑफ कोर्स, लेकिन बात ये है कि आप उसको मूव ऑन कर सके, उसको नेक्स्ट करके आप दोबारा कर सके। My name is Alyan Ansar. I am from BESCS, as you all know. My mentor is Miss Maria. She is from Poland and she works with the UN in very different matters. हमारी जो आपस में डिस्कशन होती है वो इंटरनेशनल टॉपिक्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और कुछ डिफरेंट स्किल्स के बारे में होती है जो इन इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने के लिए ज़रूरी है। We have different stereotypes and other have different stereotypes. हम लोगों को उससे किस तरह रिलेशन बनाना है, उससे किस तरह फ्रेंडली रहना है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं या कोई एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात होती है, जैसे कि AI, क्लाइमेट चेंज एंड दिस एंड दैट। और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात होती है। What's a question you hope your mentor ask you after you finish your mentorship? के ऐसे क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप मेरी mentorship ख़त्म हो गई है, जो हमारी है ना, ये क्वेश्चन मुझसे लाजमी करें कि मैं UN के लिए कितना पैशनेट हूँ या डिप्लोमेसी के लिए कितना पैशनेट। राइट। My name is Fatah Bint Shazif and I am doing Bachelor's from Computer Science from University of Rawalpindi. My mentor that I can say, Miss Adriana, is actually one of the amazing person I've ever met. When I told her about my whole personal life and my life story and everything, about my interest, and we came to know that we have some skills that are in common. Like she likes arts and craft, and I also like arts and craft a lot. She likes detective novels. She likes crime scene. We are going to explore about artificial intelligence the most. She has also interest in artificial intelligence, and I myself have a very vast amount of knowledge in this field. If your mentor asked, like let's say there was no program of like Global Horizons, you just found this person and you went to them and you shared that you need a mentorship. So in that case, if you reach out to them and your mentor asks, then why should I mentor you? Because I have excellent communication skills and I can adapt to any environment very easily and I can learn a lot in less time. If your future self looked back at this moment, what would they say to you? Sir, I will say that wow, I have grown up a lot. I have learned a lot from my past life. Even if I could not achieve something, I could still try hard until unless I achieve my goals. I would actually be proud of myself that I have came this far in any field that I go in future. Thank you so much once again. उम्मीद है आपका आज का सेशन अच्छा होगा।